Hello, good evening to all. So, in this video, we will learn page number 257. Okay, so let me read and explain. We have seen in the chapter on life process, that was your chapter number 6. That will be, in fact, that will be your chapter number 6, life process. That the food we eat is digested by various enzymes in our body. See, remember the word enzymes. So, I think right now you are not familiar with the word enzyme. So, what is enzyme? I am explaining to you. Okay, look at the screen. So, what is enzyme? Enzyme is basically a chemical that is known as biocatalyst. That is a kind of catalyst. I'm also explaining the meaning of catalyst. So basically catalyst and enzyme both are chemical, both are same. But that catalyst which is particularly used in biological process is called as enzyme. So basically enzyme is a biocatalyst. Now what is the role of enzyme or catalyst? Okay, catalysts, CATA something उसका spelling है, I don't know. Let me write कैटलिस्ट, ऐसा है, ठीक है, वो आएगा, डोंट वरी. सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एंजाइम. लेट्स से पर्सन ए एंड पर्सन बी want to marry together. Okay, but having some misunderstandings from their families. So third person C is helping to both of them for marriage. So here a person C worked as enzyme. Okay, कि जो प्रोसेस होने में हेल्प करेगा, खुद प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा. जैसे कि बात करें, मैरिज तो ए और बी का ही होने वाला है, सी का मैरिज नहीं होने वाला है, लेकिन सी हेल्प करेगा ए और बी का मैरिज करवाने में. सेम वे एंजाइम विल, ओके, व्हाट एंजाइम विल डू? एंजाइम विल faster the process, faster the biological process. Any kind of biological process is happening in the body, okay, enzyme, okay, will faster it. Enzyme will increase the speed of that process. Okay, so this is the role of enzyme. Enzyme will not react itself in the reaction. Okay, like over here, okay, C will not marry with A or B, but C will help, okay, to C will help to them for marriage. Okay, but C itself, or C himself or herself will not marry with A or B. सेम वे एंजाइम जो होगा वो खुद रिएक्शन नहीं करेगा. एंजाइम जो होगा वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होने में उसको हेल्प करेगा. नाउ आई एम रीडिंग. हैव you ever wondered why the same enzyme does not break down everything we eat? एंजाइम बेसिकली ब्रेक डाउन करने का काम करता है, लेकिन हर एंजाइम, एक एंजाइम सब कुछ, मतलब every kinds of food material cannot be break down by the same enzyme. So what is the meaning of that? देखो आगे लिखा है, enzyme are specific in their action. It's mean specific enzyme are needed for the breakdown of a particular substance. मतलब एक particular substance को ब्रेकडाउन करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए. वो हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे. जैसे कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन करना है तो स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करने में स्पेसिफिक एंजाइम चाहिए, ऐसी बात है. ठीक है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कॉल. व्हाई? बिकॉज कॉल का ब्रेकडाउन नहीं हो सकता है, बिकॉज कॉल जो है वो ह्यूमन में कॉल का ब्रेकडाउन करने वाला कोई एंजाइम
नहीं है। देखो आगे लिखा है, बिकॉज ऑफ दिस मैनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक्स, प्लास्टिक जो है उसका भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, विल नॉट बी ब्रोकन डाउन by the action of bacteria or other sporophytes. Sporophytes is also a kind of bacteria. Okay, these materials will be act upon by a physical process like heat and pressure. But under the ambient condition found in our environment, this persists for a long time. What it's mean? Basically, if we want to break down a plastic material, then it will take very long time under the ambient condition. Ambient means normal condition, normal temperature and pressure. Okay, we require heat and pressure. Okay, specific heat and pressure for broken down of plastic material. Okay, so basically it will take long time. So we can differentiate on the basis of decomposition. We can differentiate a material on the basis of decomposition. That is, the first one is biodegradable substances and second one is non-biodegradable substances. Biodegradable substances are those substances which can decomposed by a bacteria or sporophytes. Okay, मतलब decomposers. Okay, and non-biodegradable substances cannot be broken down by decomposers. देखो वो सेकंड में लिखा होगा, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो एक्टिविटी पढ़ा था, वो एक्टिविटी में जैसे कि हम वेजिटेबल वेस्ट, इफ वी आर बर्निंग वेजिटेबल वेस्ट देन इट कैन बी decomposed by decomposers. So that material or that waste is called as biodegradable waste. Okay, तो यहाँ पे लिखा होगा substances that are broken down by biological process are said to be biodegradable. Please underline this. इसका डिफरेंस आता है एग्जाम में 2 मार्क्स में. Okay, write the difference biodegradable substance and non-biodegradable substance. So for first point you can write a definition. Okay, which can be broken down वो आएगा biodegradable में. Broken down is a simpler word. Okay, decomposition is a scientific word. और जो नहीं हो पाएगा वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में सेकंड में यू कैन राइट अ एग्जांपल. यू कैन राइट एन एग्जांपल्स. हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू buried were biodegradable in the last activity? Okay, that we have discussed in last video. Substances that are not broken down by in this manner are said to be non-biodegradable. Basically, the substances, okay, which cannot be broken down by any kind of bacteria or decomposers. So it's called as non-biodegradable substances. These substances may be inert and simply persist. Inert means, do you know what is inert? Inert means non-reactive. Okay, please उसको एरो करके लिख लीजिएगा उसका मीनिंग. Inert means non-reactive, जो किसी के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता, जिसका बेसिकली मैरिज नहीं हो सकता. जैसे कि हम बात करें पोपटलाल इज अ इनर्ट मटेरियल, जिसका मैरिज नहीं हो सकता. ओके ओके, आई एम किडिंग. एंड सिंपली परसिस्ट इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम और मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम लाइक लैंड. लैंड के लिए हार्मफुल है लाइक प्लास्टिक मटेरियल. एक्टिविटी 15.2 you can cut, not an examination point of view. Then 15.2 ecosystem, what are its components? अभी उसमें जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसमें सिर्फ 2 लाइन से दिया है, वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो में साथ में डिस्कस कर लेंगे. सिर्फ हम फर्स्ट पैराग्राफ इसका रीड करते. बेसिकली व्हाट इज इकोसिस्टम? Okay, a different kinds of organisms stays in the different kinds of system, that is called as ecosystem. So basically ecosystem is a living system. Okay, any living or non-living organism situated at any system is called as ecosystem. Okay, that is included in environment. Now I am reading ecosystem. What are its components? All organisms such as plants, animals, microorganisms. Microorganisms means जो माइक्रो लेवल के बैक्टीरिया होते, वायरस होते, that is called as microorganisms. And human beings, also human beings as well as the physical surroundings
interact with each other. मतलब physical surrounds में you can take a river, you can take tree, you can take rain, water, and terrains area. So those are called as physical surroundings. So in environment, all these organisms, whether it is living or non-living, are interacting with each other and maintaining a balance in nature. If we talk about वाटर साइकिल में क्या होता है, सी वाटर जो होता है वो सन के साथ इंटरेक्ट करेगा. ओके, सन from the sunlight, okay, sea water get heated out, and it will get converted into the vapor and it will get evaporate. So basically वो वाटर साइकिल का इंपॉर्टेंट पार्ट है. अगर वो इंटरेक्शन नहीं होगा तो वाटर साइकिल नहीं चलेगा. सो दैट रेन का प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है. All the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment from the ecosystem. ठीक है, मतलब constitutes मतलब उसको चलाना. ठीक है, constitute मतलब उसको चलाना, जैसे वो environment को चलाता है. ठीक है, उसको आगे बढ़ाता है बेसिकली. ठीक है. Thus, an ecosystem consists of biotic components comprising living organisms. Comprising मतलब in short. Biotic components मतलब वही which can live, living organism का ठीक है इंक्लूड बायोटिक कंपोनेंट्स में होता है. और दूसरा आता है एबायोटिक. एबायोटिक मीन्स नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स, द ऑपोजिट ऑफ बायोटिक, that comprising the physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, and minerals. Please underline it. Okay, the example of abiotic components उसको underline कर लीजिए, और biotic components which includes and living organism. Okay, so basically in first paragraph you have learned about biotic components and abiotic components, and basically in ecosystem all the living organism and non-living organism is interacting with each other, thus our environment is in balanced situation in normal condition. ठीक है, अभी ऐसा नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है. ग्लोबल वार्मिंग है, वो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. आई थिंक वो नेक्स्ट चैप्टर इसी चैप्टर में आएगा. अब जो सेकंड पैराग्राफ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. ओके, so listen carefully and thank you very much.